5 basic things where a person can understand and audit his human body. Simple thing, can you get up while sitting without any support? 90% people, healthy people, young people cannot do it. Fridge is such a useless thing. What we call is a mortuary of the house. If we cook in the cooker, we cannot take out the vayu. We cannot take out the starch. 25 years ago, how many cases of cancer were there? Now see, in each and every house, we are having a case of cancer. Sir, you are saying you should not be using AC, you should not be using refrigerator, you should not be using oven. I think we have to go back to jungle. You have to, if you want to live healthy and happy, or you will, we have opened big hospitals for you only. Okay, sir. Pay 10 lakh rupees deposit, you are welcome. Hi, welcome to the RK Talk Show. We have invited Dr. NarayanRao, who is the founder of Indian Institute of Research in Detoxification based in Mumbai. Thank you so much for coming to our show, sir. Thank you. Sir, I would like to know, what is this detox all about? I have personally observed it, but probably I may not be the right person to, uh, explain it to the audience. See, but let me understand from the expertise. Detox? Toxins. We are having toxins in our body through our air, through our food, through our skin, through our thoughts, through our eyes, through our ears. All toxins are going in our body, and these toxins are disturbing our systems. They are blocking our nadis, they are blocking our chakras, and the problem starts. We are facing the problems. We are facing the multiple diseases. Simple thing, when I was I came here today, I saw two beautiful girls looking very beautiful. I just called them and just tested them. What is the problem? Because I could see their face was swollen. They think, no, I am very fine. I said, you are saying I am very fine. That is the real problem. So she had more than 10 liters of water in her both legs. Which is excess. Which is excess water. There should not be a single ml water in your legs. 10 liters is too much. Why it is happening? Because there is only one motor which is throwing the water from our body, kidneys. When kidneys are not functioning well, then they are not able to pump out the water, and the water is storing in the body. We are not, problems are existing in our body, but we are not aware of the problems. Yeah, I am having some problems. This was what we call this is the introspection, inner journey. What is the detoxification is totally a inner journey. How do you introspect? How a person will understand that body cannot speak? Yes, yeah, body can speak. Am I able to listen to my heart, work my lungs properly? We do not see at all. Nobody has taught us. Our education system has such a failure. They have not seen. They have not teached. We know not. Nobody is teaching this. You should look within. Actually, speaking, this is the most simple thing. Very simple thing. You can hear your heart sounds. Most simple thing. Can you hear? Here, nobody will be able to hear because we are not connected with yourself. And how do you do that? That's why first is thing every day we make it to understand what is happening. First day we make an audit, your internal audit. Are you able to breathe properly? Are you able to listen your heart sounds? Or are you able to get up while sitting without taking a support? People cannot do it. Most of the people, 90% people, healthy people, young people cannot do it because they do not know. These muscles, thigh muscles, they are not working. That's why we are not able to get up from while sitting. We are not able to get up. We have to take the support.
Why should be there support? We should not take any support. Why you are taking support? Because our body, the muscles are going weak. That's why we are not able to get up. Simple thing. So can you elaborate 5 basic things where a person can understand and audit his human body? First thing is our simple thing. Can you get up while sitting without any support? So from the floor, From the floor, sitting without down, support. without support, you should able to get up. Okay. Or next thing, you can breathe in. You should able to hold your breath at least 100 seconds, minimum 100 seconds. You see, around everybody is holding the breath only not around 30 seconds, and nobody here is able to listen to your heart because we are not at all connected to our heart. Not at all connected. Okay. So one, you said you have to get up without a support. Second, you said you need to listen to your heart. That is, you need to hold your breath for Hold your at breathing. least 100 seconds. Yes. And more 3 things, sir. So There are our audience can understand. They can there do are it. many things more. Only 3 more things. Yeah, only first to start with those 3 things. Okay. Then we can have, when they join our workshop, then Okay. they will really understand. Really, this is the real audit, which nobody in the world does it. What they will see, they will just take out your blood, take out your X-ray and get out. This is not done. Our line of examination is totally different from this allopathic angle. So now, as you said about the uh, homeopathic, Ayurvedic, all are 3 different segments, right? We belong to Hindustan, we belong to India, we belong to this country called Bharat. So Bharata has always been the land of Ayurveda, and I see in your program, in your entire 7 days program, Ayurveda, you are using base of Ayurveda and the Sanatani. Yes, we are tradition. using our Vedic wisdom, Vedic Ayurveda wisdom. knowledge, everything we are using. It's an integrated science. We have integrated with modern medical science and ancient Vedic wisdom. We have totally combined, and we have done this total 7 days workshop. How do you think these kitchen appliances has ruined the system, the Just ecosystem of human being? every woman of the house, she will go in the kitchen. The first thing what she will operate is a cooker, pressure cooker. And pressure cooker is inviting. We are inviting problems with pressure cooker. 25 years ago, there was no pressure cooker. Now we become modernized. We are in a hurry, and with the hurry, we are inviting the problems. So what happens in pressure cooker? The property of rice is what rice contains is starch. If we cook in the cooker, we cannot take out the vat vayu. We cannot take out the starch. If we are cooking dal, we cannot take out the uric acid from the dal. When the froth comes, when we boil the dal, froth comes out, and that froth in the modern olden days, it was we were taking out the froth, and there was no problem of uric acid. Now every household is having problems of uric acid, problems of urea, problems of diabetes, problems of raising blood sugar. If this is the cause. Okay. The next and most simple thing, what we are invite a problem is the microwave. Microwave. Why? Why? Because instant it is giving you. But it gives you hot food, no? Hot food, instant hot food. But with that, what we are getting is a dose of radiation. Now see, there was no microwave 25 years ago. How many cases of cancer were there? Now see, in each and every house, we are having a case of cancer. Why? Because we are buying the dose of radiation daily with our own money. Most expensive these things we get in our kitchen, and with that we are inviting the problem.
Next inviting problem is our fridge. Fridge is such a useless thing. What we call is a mortuary of the house. Oh God. What you are keeping in fridge, it becomes dead, and anybody can prove it. Anybody can prove. If you take images of these food articles with aura camera, you will see a fresh fruit and a fruit kept in the fridge. So the fresh fruit outside which is kept, it is having 100% Brahma Shakti, and the food kept in the fridge is having 0%. What is Brahma Shakti? What see, we have got only one this calorie concept. Yeah, That calorie concept, yeah, people always keep on saying you have to calorie have only concept. 2000 calories per Yeah, day, burn 3000 calories that per is day. not our concept. That is not our sankalpana at all. That is the British sankalpana, Western idea. Our idea is what? Brahma Shakti. Every food is having the Brahma Shakti. Our body works not on these calories. See, there are calories in sugar. You eat daily sugar. Will you able to live? No. No, because they are empty calories. It has got calories, but it will not help you. See, what it needs is the Brahma Shakti, Prana Shakti, which is in our live foods, not the dead foods. These are dead foods. And once we keep anything in the fridge, it becomes dead. That's why we call it a mercury box. Oh God. Fridge happens to be a mercury box. Um, how about the ACs then? You see, to have same thing. See, what is happening? What is your temperature? Our temperature, body temperature is 38 degrees. What Okay. temperature we are keeping in the house? 16 degrees, 18 degrees, 20 degrees. So body is crying, I want to be hot. I want to be hot at 38 degrees. And we are jabardasti, we are bringing it down to 18 degrees, 20 degrees. Body is crying, body is shouting, I want to be hot. We are hot-blooded animals. We are not cold-blooded animals. Because if temperature goes down below 30 degrees, due to hypothermia, person dies. We do not know this thing because we are young. But it always keeps you fresh. It feels you good. That is a false sense of well-being that we call false sense of well-being. You don't perspire. I mean, That perspiration is most important thing. We are stopping perspiration. Perspiration is a way of detoxification. Our body is breathing, and we are stopping that breathing. We are stopping that elimination. System. You see who the people who are sleeping in AC, sitting in AC. See how what is their muscle mass? Muscle mass is it goes below 70%. It becomes body becomes very soft. Why? That is the cause of the AC. That is called there is one reaction called gluconeogenesis. Due to this, what happens? Energy needed it comes from our muscle breakdown, not the fat breakdown, not the carbohydrate breakdown. So this is the most dangerous thing. This is the most disadvantage of sitting in AC. I mean, sir, you are saying you should not be using AC, you should not be using refrigerator, you should not be using oven. I think we have to go back to jungle. You have to, if you want to live healthy and happy, or you will. We have opened big hospital for you only. Arey, sir. Pay 10 lakh rupees deposit. You are welcome. Oh, right. So if you don't want to go to hospital, just very simple. We don't want to spend money. We don't need any money to live happily. Free of cost we need. We live happily. We are free. No fridge, no AC. अपने आप खर्चा कम हो जाएगा सर. One more thing, Dr. Saab, usage of aluminium in the kitchen, the aluminium foil. Aluminium, see, who brought aluminium in here? English people. They were for our prisoners. Why? Because aluminium is a neurotoxin. By eating an animal, you are getting daily dose of neurotoxins and people die early. And still, because we are still now, we are slaves, we are having the aluminium vessels in it. Now, new form of aluminium you must have seen.
non-stick cookware, inside aluminium, outside plastic. What we have done? See, modernity, technology. What they want? Technology? No. This is the non-stick cookware. We need it. We don't need this plastic. We don't need plastic. We don't need aluminium. What we need is a brass, which we have thrown from the house. What we are doing with the brass? We were having the kalai from inside, and kalai contains zinc. Now, corona, you must have seen what every doctor was giving you. What? Zinc tablets. Zinc tablet. Our ancestors are given daily zinc tablet. Daily. Use the brass vessels, you were getting zinc daily. Use the iron vessels, have daily iron source daily. Why you want from outside? Daily feeding of iron, daily feeding of copper, daily feeding of this simple thing of silver. Where we are keeping silver? In lockers. We are not using silver water. Just put water in the silver vessels. Water becomes alkaline in 5 minutes. But we don't use it. Silver, I will tell you one more. What we are daily using is a stainless steel. Why we are using stainless steel? Because it is convenience. And what you get from stainless steel is nickel. Do you need nickel? The answer is a clear no. What you should use is the brass. What you should use is the copper. What you should use is the bronze. We don't use it because we have become modern. We want to become more. We want convenience. And that is giving you oil. We are inviting the problem. We are inviting. Anyway, देखो सबका हीमोग्लोबिन बिलो 10, सबका देखो कितने हमारी ये है महिलाएं हैं, हीमोग्लोबिन बिलो 10, एवरेज हीमोग्लोबिन इज बिलो 10. क्यों? Because we are having, you are using this aluminum. We are how many houses are we are using this iron tawa? Very few houses. Everybody using non-stick tawa या फिर aluminum tawa because convenient. Non-stick marketing. They don't see what we are getting it. Once you go in your bathroom, see what is in toilet. We have kept a commode. And all the problems start from commode. You cannot empty yourself. You cannot eliminate yourself. The commodes have come in last 25 years. There were no commodes. Now everybody house is having commode. And the moment you sit on a commode, your system cannot be eliminated. 30% is always remaining inside, and it goes on stacking, and all the problems we invite with this. Oh, so you want to say commode is also not appropriate for human health? That is the gift of English people to us, and we are still slaves. See, simple chair. You sit on chair. 25 ago there were no chairs in their house, or chairs or sofa. What happens when you sit on the chair? Our legs are down 1.5 feet. Simple thing. There are two peripheral hearts in our both. This Can you come again? There are two hearts, peripheral hearts. पिंडली में हमारे पिंडलियों में 2 हार्ट होते हैं, जिसमें 500 से 700 ml ब्लड ऑल द टाइम होता है. So you are talking about the calves. काफ में 2 हार्ट होते हैं. तो ये ब्लड ऊपर कौन खींचेगा? There is only one pump, heart. Simple thing, just put the legs up. What will happen? 40% load of the heart is reduced for nothing doing. Simple thing, just put the legs up. Your heart load is gone. 40% load is gone. Nobody will help you to pull the blood. That is the only pump which is pulling the blood. But we do not understand this thing. Nobody has taught you what happens while sitting in chair. What happens while sitting in sofa? What happens sofa? When we sit in sofa, and due to this sofa sitting habit, what is our legs are becoming weak. You are not using your muscles, hamstrings and quadriceps. Because of the softness, because of the more sophisticated springs used in the... Once you sit down, you have to use both the muscles. Oh.
You have to say hello to your muscles, then they will say hello to you. Otherwise, your body is going to be weakened. That is what we call sarcopenia, weakening of your legs. And this is the cause, this chair and sofa, that we are not able to get up while sitting. Just try, anybody around you, people, you are working so many places. Just try. People cannot get up without any support. If we see what is here inside in our vertebral column, there are 32 pieces of vertebra placed in one line. And if you sit like that, what happens inside? They start shouting, "अरे क्यों मुझे परेशान कर रहा है? Sit straight." तो नहीं, अब मेरे जो एक ही नशा है, अरे मैं तो सोफे में बैठा हूँ, वो आवाज वी कैन हियर दैट साउंड कि अंदर से आवाज आ रहा है, अरे सिट स्ट्रेट, आवाज हमको सुनाई नहीं देता है. Just listen the inner voice, and we teach the same thing in the 7 days. Listen to inner voice. Automatically you will change within. मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो हम ये कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए सर, साइंस और टेक्नोलॉजी तो बढ़नी चाहिए. तो इसके ऊपर हम ऐसे क्या और चीजें कर सकते हैं जहां से ये कौन से चीजों को हम अपना सकते हैं और उसको हम कैसे मार्केट कर सकते हैं? बिल्कुल, एक छोटी सी बात है, फ्रिज. नाउ यू मस्ट हैव ना, मिट्टी का फ्रिज आ गया है, सस्ता 8,000 रुपए का फ्रिज है सिर्फ. मिट्टी का 8,000 फ्रिज. रुपए का मिट्टी कूल नाम का फ्रिज आता है, एक मिट्टी का बनता है. दैट इन दैट 8 days fresh vegetables, milk can be kept it, but we don't want that. So you are talking about a fridge, electronic fridge? No, not electronic, mitti fridge. No electronic fridge. We don't want any radiation at all. Natural fridge. Natural. मैंने तो कभी सुना नहीं सर ये मिट्टी वही का तो फ्रिज बात है क्या ना, होता है. हम मैंने मिट्टी का we are so much मैंने educated, but we do not know what is better, what we should replace. हमको वो नहीं चाहिए, हम किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी हो गई है, कंटिन्यूअस हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग, ये चाहिए ही चाहिए, एसी घर में चाहिए, ये तो आप एकदम आउटडेटेड हो गए हो. फ्रिज चाहिए ही चाहिए घर में, कमोड चाहिए ही चाहिए. अरे व्हाट यू आर चाहिए, what we need, we are forgetting our needs. ये तो सब डिजायर्स हो गए, नीड्स नहीं है. नीड्स फर्स्ट बी शुड बी फुलफिल्ड, which we are, that is called this inner journey. What we need our body, what we need our body, that we teach you in the 7 days. ओके. सो मिट्टी का फ्रिज हो गया, नीचे से जमीन पे नीचे बैठकर उठना हो गया, खुद के ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल लाना हो गया, ओपन कुकिंग हो गया. ओपन कुकिंग. नाउ सर अभी मिट्टी के बर्तन में करो मस्त. इट विल टेक 1 hour, बट यू टेस्ट, वंस यू टेस्ट मिट्टी का बर्तन, यू विल नॉट. सर एक वक्त 1 घंटा है किसके पास? वही तो बात है ना, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट योर डे अर्ली. बस आधा घंटा अर्ली शुरू करो, होगे देखो क्या होता है. सी द मैजिक. दाल चाहिए, दाल जस्ट सोक द दाल इन द ओवरनाइट. सी how fast it cooks. In half an hour it cooks. You have to find out your ways if you want to be healthy and happy. What we are aiming is disease-free society and medicine-free world. That is our motto. There should not be any disease and nobody should have any medicine. और इसलिए 100 साल जीने का प्रयास. पर ऐसे पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल. And it's very easy. We will save the money on the contrast. We will save the money if you follow this. Lot of money can be saved. 50%, almost 50% money can be saved. सर डिजीज फ्री और विदाउट मेडिसिन, ये सोचने के लिए बहुत अच्छा लगता Very है. easy. Everybody, there are so many people who have done detox from me. They have thrown away the medicines. Thrown away. Those who have gone under bypass, those who have gone under angioplasty, they have thrown the medicines. No BP. BP will forget. Diabetes will be forgot. Khatam diabetes. BP khatam. थायराइड खत्म, पीसीओडी खत्म. ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं सारे निकल जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू लर्न हाउ टू रीसेट आवर सिस्टम.
सिस्टम रीसेट हो गई, पीसीओडी क्यों होगा हमारे बच्चों को? पीसीओडी होना ही नहीं चाहिए, थायराइड होना ही नहीं चाहिए, बीपी होना ही नहीं चाहिए, शुगर बढ़ेगा क्यों? ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं एकदम। घुटने किसी के दुखने ही नहीं चाहिए बिफोर आफ्टर 40। अभी से शुरू करो ऑन वर्किंग ऑन दैट घुटना। बिल्कुल ऐसे हम तो बोलते हैं कि हाँ, हम हमारे पास तो एक ही है, ये हम रोज लेते हैं, एक संकल्प संकल्प कि आखिरी सांस तक खुद के पैरों पर खड़े होना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। किसी को वी डोंट वांट एनीबॉडी टू गो इन द हॉस्पिटल एंड वेट और स्लीप ऑन द बेड एंड वेट फॉर 1 ईयर 2 ईयर। इट इज नॉट लाइक दैट। हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ मुक्त होने के लिए आएंगे। ऐसे जाएंगे जैसे अभी ऐसे रात में सो गए, सुबह गायब। ऐसा होना चाहिए, मुक्त होना है, मरना बिल्कुल नहीं है। वेरी वेरी एनलाइटनिंग थॉट सर। अब थोड़ा आपने बताया नेचर के ऊपर, आपने कहा कि सुबह जल्दी उठिए। हाउ द नेचर, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम, बर्ड्स, एनिमल एंड द अदर जीव शास्त्र ऑफ दिस वर्ल्ड is connected to human body. बिकॉज एवरी एनिमल अराउंड देर आर, हम बोलते हैं कि वहाँ 84 लाख योनियां हैं। तो हर योनि में जो आता है बंदा, वो कहाँ से आता है? तो पंच महाभूतों से, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पंच महाभूतों से आएगा और वहां वापस जाने वाला है। वी आर कमिंग फ्रॉम नेचर ना, एंड विल गो बैक टू नेचर। So you have to be with nature. If you go from nature away, problem will be evident. You will face the problem. Punishment है यहाँ, आज और अभी, आज और अभी। सो ये जो बर्ड्स है, जैसे आप हमेशा आपके शिविर में कहते हो कि हमें पंछियों की तरह रहना है। जब वो सोने जाते हैं तभी आपको भी आपका पूरा इकोसिस्टम से बाहर आना है और आपको भी आपका खाना पीना, इवन टीवी देखना, ये सब चीज़ से आपको दूर रहना है और आपको आपके इनर सेंस में जाना है। और जैसे वो सुबह 3-4 बजे उठते हैं वैसे आपको उठना है। हमको बिकॉज देखो हमारे पास, हम वी आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर, सन। ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है, हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं। नहीं है। वी आर वेरी स्मॉल एनिमल इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स। They are controlling us. We are not controlling them. We are one of 84 लाख unions. Only one. There are like us. There are so many lakhs and lakhs of unions. We forget who we are, from where we came, and where we want to go. We are forgotten. But we are running, running, running. But where to run, we do not know. ओके। लाइक मुझे अभी डिटेल में कॉन्वर्सेशन जा रही है तो कुछ चीज़ याद आ गई कि जब जानवर को, किसी जानवर को कोई चीज़ लग जाती है या उसको कोई चोट पहुंचती है तो वो अपने अपने खुद के ही सलाइवा से उसको ठीक करता है, मतलब वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो जैसे आपने बताया कि ये पीसीओडी, पीसीओएस, ये खुद हम ही हील कर सकते हैं। सेल्फ फीलिंग पावर है हमारे पास, उसको हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है, अलग कुछ नहीं करना। इतना सिंपल है बात। हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना, उसके ऊपर हमने वजन रखा है। वजन रखने को निकाल दो, टॉक्सिन्स निकाल दो, सारा अपने आप चलता जाएगा। ओह! ये सुपर स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, स्टैंड अलोन। Okay, now as we were discussing about this saliva, ये जो जानवर खुद ही को आप लिक करते हैं या अपने आप को वो हील करते हैं, तो ये सलाइवा में कितनी ताकत होती है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर तो सलाइवा में ही है, और हम उसको ही यूज नहीं करते हैं बिल्कुल। जैसे देखो सलाइवा कब कब शुरू होता, कंटिन्यू चालू चालू रहता है ना। जैसे हम पानी का ग्लास लगा दिया मुंह को, पानी टच हो गया, सलाइवा स्टॉप हो गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। पानी पिएंगे तो थोड़ा ही पानी पीना है, ज़्यादा पानी पियोगे तो सलाइवा स्टॉप होता है। हम क्या बोलते हैं कि 32 बार चबाना है। क्यों चबाना है? क्योंकि दैट एक्शन
एक्सट्रैक्ट द सलाइवा। और मुंह में ही अगर हमारा 30 to 40% डाइजेशन हो गया, हमारा काम ही बन जाता है। अंदर का जो आगे जो लोड पड़ता है वो लोड हम यहीं से ही निकाल देते हैं। तो ये हमें सीख जाना है, हमारे अगले बच्चों को सिखाना है कि भाई यूज यूर सलाइवा हियर। जो मेरे पास इतनी बड़ी गिफ्ट है, मेरे पास आज इतना बड़ा गिफ्ट दिया है भगवान ने कि 1500 सीसी हमारे मुंह में सलाइवा है। 1500 सीसी, यूज इट। सर, आप हमेशा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और उपवास, इसके बारे में हमेशा आपने ये कहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ मिथ, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे पास तो पहले से कब था। अब आप इफ यू नो योर फादर और योर ग्रैंडफादर, हाउ मेनी टाइम दे वर ईटिंग? ओनली 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अभी आपके घर में एक सर्वेंट है, आप सर्वेंट को सुबह 8 बजे काम दे दिया, फिर 10 बजे काम दे दिया, 12 बजे काम दिया, 2 बजे काम दिया, 4 बजे काम दिया, 6 बजे क्या बोलेगा सर्वेंट? मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, इतना काम मैं नहीं कर सकता। यही बात अंदर होती है। तो आपने कुछ अंदर डाल दिया, तो आपने क्या किया? आपके अंदर 13 लोग हैं, 13 स्टाफ है आपके सेवा में, 13 सिस्टम है हमारे अंदर। तो वो जाएगा लीवर पर, जाएगा लीवर पर उसको काम करना पड़ेगा। एक बार करेगा, 2 बार, एक सर्वेंट को 2 बार काम देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। 10 बार काम करेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, आधा ही काम छोड़ जाएगा। ऐसे ही ये लीवर है हमारे पास आज। आज कितने लोगों को देखो फैटी लीवर हो गया है। और फैटी लीवर कैसा है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज फेसिंग दिस ग्रेव प्रॉब्लम। कारण क्या है? कंटिन्यूअसली मिंचिंग कंटिन्यू, जो आया सामने खाया, जो आया सामने, अरे खाया ठीक है, खाना यहाँ तक खत्म, अंदर क्या हो रहा है? अंदर आपने सबको काम को लगा दिया है। आज हम बोलते हैं कि हाँ, यहाँ अब सूजन है पैरों पर। क्यों हो गया सूजन? क्योंकि उस पर हमने ज़्यादा काम दिया है। हम रात में भी पानी पीते रहते हैं, दिन में भी पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी भी कितना पानी चाहिए, उसको भी एक लिमिट है, खाने को भी एक लिमिट है, हर एक को एक लिमिट है। क्योंकि हमारे हर हर ऑर्गन को एक लिमिट है। उतने लिमिट में हम उसको काम देंगे तो वो सही तरीके से काम करेगा। ज़्यादा काम देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। हार्ट का ऐसे ही है, लंग का ऐसे ही है, लीवर का ऐसे ही है, किडनी का, पैंक्रियास का। पैंक्रियास पे ज़्यादा काम दिया तो शुगर बढ़ना चालू हो जाएगा, वो बोलेगा मैं काम ही नहीं करूँगा। अब कितने लोग हैं अभी, हाँ सडन हम बोलते हैं कि सडन मेरा वेट बढ़ गया है, 20 किलो वेट बढ़ गया है। ये वेट क्यों बढ़ा है? क्योंकि फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, फूड इज ओनली एब्सॉर्ब, एंड दिस एब्सॉर्ब फूड इज कन्वर्टेड इनटू फैट। तो पहले ध्यान देना है, जस्ट लुक विद इन व्हाट इज हैपनिंग। अंदर क्या है, तेरा सिस्टम है। अब यू आर सच ऑन बिग पोस्ट, हाउ यू मैनेज यूर पीपल, कि हर एक को सही काम दोगे। ऐसे ही आपको यहाँ जो 13 लोग हैं, 13 लोगों को सही काम देना पड़ेगा। सच अ ब्यूटीफुली वे ऑफ पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो लोग ऑब्सेस नहीं हो जाएंगे एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के बाद, के ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। ये जब समझ में आएगा कि क्या करेंगे तो क्या होगा, तो बाद में छोड़ देगा। अभी छोटी सी बात, हम बोलते हैं सनसेट से पहले खाना खाना है। एक बार उसको क्यों खाना खाना है सनसेट के पहले, अपने आप खाएगा, अपने आप बंद कर देगा। डिनर हमारी संस्कृति ही नहीं है, वैसे ब्रेकफास्ट भी हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। हमें खाना खाकर निकलना है, तो घर जाकर खाना खाना है। आज क्या हो गया, हम बोलते हैं मैं 10 बजे घर पहुंचता हूँ। पहुंचो 10 बजे घर, किसने रोका है आपको? 6 बजे ऑफिस में खाओ। ऑफिस में 6 बजे खाओ ना, 2 डब्बा घर पे लेकर आओ। ऑफिस में खाना है, 6 बजे खा लो बस। घर जाकर कुछ खाना नहीं है, तो फिर पानी नहीं पीना है। जो सुबह में खाएंगे वही रिपीट आपको शाम को भी खाना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपको मैनेज करना है। वो पैसा, चॉइस नहीं शरीर मिलेगा आपका है, पैसा आपका है, तो चॉइस भी आपका आप ही ही के लिए। चाहिए। सो जैसे आप कहते हैं कि सर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ मिथ, और ये जो आपने बताया कि हिंदुस्तानी इतने सालों से जो जिस हिसाब से जी रहे हैं, जिस हिसाब से उनका वो एक रूटीन रहा है, वैसे ही हमको रूटीन 2 ही बार शुरू खाना रखना है। सिस्टम, देखो एक बार समझ लो कि क्या है अंदर, क्या है अंदर के सिस्टम। हमारी हमारे वो स्टाफ है, वो स्टाफ से काम करा के लेना, ये हमारी मैनेजेरियल एबिलिटी है। जितना आप अच्छा मैनेज करोगे,
उतना वो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। आप देंगे। मैनेज नहीं करेंगे तो वो बोले चलो जाने दो, स्ट्राइक पर जाएंगे हम। वो स्ट्राइक पर गया, पैंक्रियास स्ट्राइक पे गया तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है डायबिटीज। हार्ट गया स्ट्राइक पर तो बीपी मिलने वाला है। ओके ओके रात में 12 बजे तक बैठोगे, क्लोरीन का पानी पियोगे तो आपको थायराइड मिलने ही वाला है। ओके। डॉक्टर नारायण राव, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो पर आए, आप हमारे गुरु रहे हैं और डॉक्टर नारायण राव ने जो बेसिक लाइफ को किस तरीके से, रूटीन लाइफ को किस तरीके से जीना है, इसके ऊपर उन्होंने जो भी हमें आज तक मार्गदर्शन किया, मैंने तो डेफिनेटली उसके ऊपर चलने का प्रयास किया है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आपको भी आह्वान करूँगा कि ये जो बेसिक लाइफ है, इसके ऊपर आपको भी चलना ज़रूरी है। खुद के लिए नहीं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए। धन्यवाद।